So what is Docker, right? First of all, let's not think about Docker. Let's think about something else. Okay. So let's start with a server. Okay. And actually, server means what? Anyone has any means you guys have an idea, but can anyone summarize what is a server? Right? When you say server, what does it have? मतलब सिस्टम है जो रिसोर्स प्रोवाइड करता है, रिसोर्स Exactly. डेटा सर्विस ये सब प्रोवाइड करता Okay. And anyone other? दूसरा कुछ? Okay. Let's start. So सर्वर इज ए सिंपल, मैं अगर ऐसा एक कुछ ड्रॉ करने का ट्राई करूँ तो इट्स अ सिंपल बॉक्स, राइट? एंड दिस बॉक्स व्हाट इज इट इज हैविंग, राइट? ये सर्वर में क्या रहेगा? सो देयर विल बी सम मेमोरी, राइट? देयर विल बी सम सीपीयू कोर्स, ठीक है? और नॉर्मल जो जो इसमें नहीं रहेगा, राइट? सीपीयू कोर्स, मेमोरी, एंड नॉर्मल जो चीज़ नहीं रहेगा इन योर लैपटॉप, और यू कैन थिंक ऑफ ए नॉन सर्वर, यहाँ पे एक नेटवर्क कार्ड रहेगा, एनआईसी कार्ड बोलते हैं, नेटवर्क कार्ड। सो नेटवर्क कार्ड, सो नेटवर्क कार्ड का काम होगा कि assume that each server will be provided one IP addresses. Okay, so network card will provide their IP addresses. Okay, so one server is connected with the www, right? When it is connected with the internet, so that server will have its own IP addresses. Okay, so these are the three physical parameters we can focus as of now. There are lots of other things, but that one server is having. Okay, now this is going the hardware part. Now what is the software part, right? So in the software part, what one server should have a base operating system, right? Yes or no? है। यस, So base operating system, can anyone tell me the name of the any name of the operating system, what you know? लिनक्स विंडोज। Great. Linux, Windows, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम का व्हाट इज द फंक्शनलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? व्हाट इट डज? इट कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर, राइट? यस. यस, How it communicate with the hardware in software? So if you go inside the operating system, right, operating system also having, I can physically, or I can, if I try to, there will be lots of layers, but operating system will have two layers. Okay, or I can just draw in that way. Assume this is my operating system. Operating system will have what a operating system will have. There is a kernel layer, and there should be some process. Okay. What I'm trying to say, that this kernel layer will contain the actual programming, the most lower level programming, or lower level programming which is there to interact with the hardware. Okay, and above the kernel layer there will be lots of software process, or you can think of a software programming, right? There might be some process to allocate the memory, there might be some process to just do something else, lots of operating, if you go into the details of operating, so lots of threads, lots of processes are running. So those are the processes we call, and processes directly can't interact with the hardware. Processes will always call kernel program to interact with the hardware. Okay, ठीक है?
Fine. Yes. Okay. Now there are, if let's take the only the Linux, because Linux is the most important, or mostly open source basically. Linux is very open source. Let's take example of Linux. So does Linux does everything? No. Linux is having its own lots of distribution of Linux. If I give you a name, I think it will be it will be recognizable. So CentOS, you have heard this word. Ubuntu, right? Yes, Yes. Yes. सुना है CentOS का सिस्टम होता है. CentOS क्या करता है? CentOS, या if you can think about the Ubuntu, ये क्या करता है? So this is the distribution of Linux, because CentOS is like a Windows, right? So it is having operating system. It is, and this operating system is a Linux operating system. But above of that, there is some application processes which is providing you to do some functionality. But those are the application processes. Like if you install the CentOS in your system, there will be one good wizard or GUI, right? Everything will be there. Okay. But if you think about the only Linux, Linux can interact with the command line only, right? But above on that, CentOS is providing lots of application to be used, right, in that Linux, right? So in a true sense, what I'm trying to say, that Linux is not sufficient for a server or for something, right? So there might be some additional process which might be needed, right? So that is being provided by the lots of distribution which is already marked, which is available, right, for Linux. So one distribution is like CentOS. Okay. So now if you want to run a Java program in the server, what will you do? So you need to just buy the server. So server has memory, CPU, cores, and network card, everything, right? Then in the server you should have the base operating system. Assume that that is Linux, right? And above that you should have CentOS. Okay. Assume that I have CentOS, right? Above that, what? You want to run a Java program, so you need to install JDK, right? Yes. Yes. ठीक है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, let's come here, let's give it the Linux processes, or you can think of this CentOS is having including the Linux processes. So I'll just give the layering, that assume कर्नल को नीचे कर देते हैं. ठीक है, ऊपर CentOS है, उसके ऊपर है JDK, right? And if you running a Spring Boot application, so Spring Boot application क्या करता है? It will run a Tomcat server, right? By default it will run a Tomcat server, but आप JTB चूज कर सकते हो. So आपका एप्लीकेशन के लिए एक Tomcat सर्वर रन होगा, उस Tomcat सर्वर के ऊपर आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम रन होगा, राइट? एम आई करेक्ट? देन आपका जो सर्वर का जो फिजिकल आईपी एड्रेसेस है, राइट, एंड उसका एक पोर्ट में एक एप्लीकेशन कैन बी रन इन सिंगल पोर्ट, राइट? सो सपोज 80 पोर्ट में आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है. सो इट विल टेल ऑपरेटिंग सिस्टम कि मैं आपका जो 80 पोर्ट है उसको ब्लॉक कर देता हूँ, मैं 80 पोर्ट के साथ मैं बाइंड हो गया. सो वट एवर आउट, मतलब कुछ भी, ये अगर आई पी एड्रेस का 1.1.1.1 आई पी एड्रेस है, so anyone in the internet, if someone is pinging on a 1.1.1.1.8080, it will be redirect to the application program. ठीक है, क्लियर है? ओके. Yes. Yes. ठीक है, कोई सो तो नहीं गया? सब ठीक है ना? No, no. Okay, ठीक है. So this is the server. Now this was very good. This was running fine. This was something like, but if you can think about the layering, right?
in a physical server, can I run can I run two distribution in a same server? I want to run CentOS also. For some of my application program I need Ubuntu. Can I run this? No. In a physical server you can't run this. Simple answer is no. Why? Because kernel and kernel is tightly coupled with the CentOS. So basically kernel को एक ही जन instruction दे सकते हैं. Until you are doing something extra you can't do anything. Okay, ठीक है. सो दैट्स ए प्रॉब्लम. सपोज आपने एक सर्वर खरीदा, उसका मेमोरी है आपने ज़्यादा लिया, 32 कोर्स, सीपीयू लिया 32 कोर्स, एंड मेमोरी लिया, नेटवर्क कार्ड है, एक नेटवर्क कार्ड समझ लीजिए कि 2 नेटवर्क कार्ड है या एक ही नेटवर्क कार्ड है अभी के लिए, एंड मेमोरी यू जस्ट टेक विथ 256 GB. ठीक है, अभी आपने ये सर्वर खरीद लिया आपके कंपनी के लिए, बट प्रॉब्लम इज इन दिस यू कैन ओनली रन सिंगल एप्लीकेशन. और इफ़ आई टेल यू दैट आप स्प्रिंग बूट वे में मत जाइए, आप टॉमकैट के ऊपर मल्टीपल एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, बट यू कैन रन ओनली द जावा एप्लीकेशन, राइट, inside the Tomcat server. But outside of the Tomcat, can we use something? Yes, you can use something, but that should be everything should be supported by CentOS. जो CentOS ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप रन कर सकते हो उसी चीज़ को आप रन कर सकते हो. बट इफ़ यू नीड समथिंग ऑन द विंडोज़, कि आपके पास एक एप्लीकेशन है जो पूरा विंडोज़ में चलता है, तो आप उसी जो सिस्टम है उसको विंडोज़ में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते. आप इंस्टॉल ही नहीं कर सकते विंडोज़, क्योंकि आपका जो हार्डवेयर है, आपका हार्डवेयर का जो बेसिकली कर्नल प्रोग्राम है, कर्नल कैन लिसन टू ओनली, मतलब कर्नल को इंस्ट्रक्शन सेंटोस ही भेज सकते हैं, राइट. सो दैट वाज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक एरिया, ओके, फॉर मेनी ईयर्स. देन आई थिंक द concept came in the virtual machine. ठीक है, so this is, we will call this as a bare metal server, or simple the old model of server, right, bare metal server. Okay, now I'll draw another diagram which is okay. Now what actually what the next level came. So next level came, okay, ठीक है, कर्नल तो है, कर्नल के ऊपर एक प्रोग्रामिंग आया जिसका नाम है हाइपरवाइजर. ओके, अब ये जो हाइपरवाइजर है, हाइपरवाइजर के ऊपर आपका VMs होते हैं, वर्चुअल मशीन्स होते हैं. ठीक है, VM1, VM2. ठीक है, अभी ये जो VM है, ये हाइपरवाइजर क्या करता है, टोटल जो रिसोर्स है उसको डिवाइड कर देता है. जैसे CPU कोर्स है 32, मेमोरी 256 GB, नेटवर्क कार्ड अगर यहाँ पे 2 नेटवर्क कार्ड है, तो आपका सिस्टम का जो जितना रिसोर्स है, फिजिकल जितना रिसोर्स है, उसको वर्चुअलाइज करके VM क्या करते हैं, 2 डिवाइड कर देते हैं कि ठीक है मैं इतना कोर यूज़ करूँगा, आप 256 GB से मेरे को चाहिए 40 GB, ओनली 40 GB आई नीड, सो आई विल क्रिएट ए VM विथ 40 GB. ओके, सो फिजिकल सर्वर का एक पार्ट लेके एक दूसरा VM बन गया, वर्चुअल मशीन बन गया. एंड वर्चुअल मशीन के अंदर क्या रहता है, नाउ वर्चुअल मशीन विल हैव its own kernel programming, so it is starting from this layer. ठीक है, starting from this layer. Okay, so every virtual machine, right, will have its own operating system, that means own kernel programming and its distribution layer, right. Then the above, for Java application we need JDK, then we need application Tomcat, then we need to install the application which is running this 8080.
and this VM1 is getting allocated with that NIC card which is having this port. Okay, now VM2 might have several another another app operating system. That might be Windows, that might be kernel programming, that might be Windows, right? Lots of things will be there. Then tomorrow you can have a VM3, VM4, right? So whatever you are doing right now in your system might be that is the VM, right? Virtual machines. Okay, so in a bare metal physical server you are just using creating your own machine with some limited capacity, right? You are taking that memory, that much resource, right? So then you can create your VMs. Okay, इधर तक समझ में आया, right? Good. ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या था? मतलब ये तो सही चल रहा था, बट प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि VM is very heavyweight. VM is not very lightweight, or VM is a actually VM is very heavyweight, and it is having जो VM का जो इमेज होता है ना, मतलब आप एक VM रन करते हो तो आपका बूटस्ट्रैप प्रोसेस बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है? बूटस्ट्रैप प्रोसेस हार्ड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लाइक VM को रन होने में टाइम लगता है, VM को डाउन होने में बहुत उसका प्रोसेस है. सो स्टार्टअप एंड शट डाउन प्रोसेस आर वेरी लेंदी, वेरी प्रॉब्लमेटिक, राइट? लॉट्स ऑफ डिपेंडेंसीज देयर. ऑल्सो आपका जो है मतलब VM का इमेज का साइज भी बहुत ज़्यादा होता है. सो व्हेनेवर I'll just give you one idea. तो आप अगर समझ लीजिए कि सेंटोस अब आप अगर अपना सिस्टम में डाउनलोड करते हो तो उसका जो जो इमेज आता है, इसको हम बोलते हैं एक्चुअली ISO इमेज बोलते हैं. ISO इमेज का साइज बहुत ज़्यादा होता है. इट्स लाइक ए VM इमेज, VM इंस्टेंस, राइट? But how the technology evolved and how the next layer came into picture, next level. So then people are thinking that okay, let's make more virtualized thing. यहाँ पे सब कुछ virtualize है, but ये kernel virtualize नहीं है अभी तक, right? So each application is coming, each sorry operating system, each VMs is coming its own kernel, right? And that's very problematic, and kernel is taking the maximum it is consuming the maximum resource or maximum memory or maximum, it is a very hard process. Okay, then technology came into picture that okay, let's do one thing. Okay, let's draw the last diagram. Okay, that is, I'll draw it here. Same thing, sorry, यहाँ पे मैं एक जगह पे कर्नल लिख दिया था, बट यहाँ पे नीचे कर्नल नहीं रहेगा. कर्नल विल हैव द सुपर हाइपरवाइजर से स्टार्ट होगा. उसके ऊपर जो फिजिकल जो रहेगा, राइट? नाउ व्हाट इज हैपनिंग, राइट? सो आई एम सेइंग कि मेरा जो VM नहीं रहेगा, मैं हार्डवेयर का जो कर्नल प्रोग्राम है उसको यूज़ करूँगा. ओके, एंड दिस कर्नल माइट बी लिनक्स. ठीक है, नेक्स्ट ऊपर क्या रहेगा, ये मेरा कर्नल प्रोग्राम रहेगा. मैं कोई भी एक एक समझ लो कि सेंटोस है या उबंटू है, उसका कर्नल लेस प्रोग्रामिंग चाहिए, मतलब जो उसका जो सॉफ्टवेयर लेयर है, आई नीड दैट पार्ट ओनली. ओके, so what I will do, I will use the kernel, and above on that, right, I'll create a package. Okay, and that package will have it will start from the CentOS, but that CentOS should not have its own kernel. CentOS should have its own processes. जो भी processes रन होता है वही process उसमें होना चाहिए, right? So we call that image as a container image. ठीक है, just keep this word in mind, I will come into later. ठीक, so what I'm trying to say, I'll create a package, right, that will have the CentOS container image, and that will have JDK, right,
and that will have Tomcat, and that will have my application. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके ये जो 4 लेयर है इसका मैं एक पैकेज बनाऊंगा और उसको मैं कोई भी कर्नेल प्रोग्रामिंग, कोई भी हार्डवेयर, सो I'll just deploy this package into the actual machine, bare metal system, or any server. So what will happen, so instead of VM, this package will start, working, but it doesn't have its own kernel. It will use the hardware kernel only. जो हार्डवेयर का जिस सर्वर में मैं बैठा हूँ उसका जो हार्डवेयर कर्नल है उसको वो यूज़ करेगा. ओके, इट विल नॉट यूज़ एनीथिंग एल्स. ठीक है, दिस पैकेज का एक फंक्शनलिटी ऐसा होता है, जब आप VM करते हो, VM में आप डिप्लॉय करते हो, यू ओनली डिप्लॉय द एप्लीकेशन, राइट, एंड इनसाइड दैट एप्लीकेशन व्हाट you are having actually, you are starting, if you talk about the Spring Boot application, you are starting from a Tomcat plus application. Matlab, what I'm trying to say, you are deploying a jar file. That jar file will contain the application logic, compiled version of application logic, including the Tomcat dependency, right? But inside that you can't run a JDK. Inside that you don't have the JDK, or inside your program there is no CentOS, right? But what I'm trying to say, that if I can do a packaging system, that package, inside that package only, not only the software program or not only that our jar file, inside that package, if I can keep first CentOS image, next JDK, next Tomcat, and then application, this 4 layer, right? Then it will give me a freedom that okay, this is the complete package for my application. I can deploy this complete package to any of the system, right? I'll use the kernel program of that system, but that can be very fast, right, to in case of deployment, and I can stop the process, I can start the process. And this package is called container. Okay, so earlier container, when container came into picture, container is like a zip container, कि आपके पास एक बहुत बड़ा एक मेटल का बॉक्स होगा, मेटल का बॉक्स के अंदर सब कुछ कंटेन होगा. Earlier it was not a container, it was just the application programming. You want to just add, right, add the Tomcat dependency or the application logic. But if you want to run a Java in a server, you should have the JDK, or Java in a VM machine, you should have the JDK installed inside that VM. तो आप अगर, if anyone can remember, I think this is for Snehal and Anjali. हम लोग जब एक सर्वर को एक्वायर करते थे, पहले हम क्या करते, सर्वर AWS सर्वर लेने के बाद, आई थिंक वी आस्क the admin team to install the JDK, right? After that our application will run, right? Yes or no? Can you remember? Yes, yes. yes. हम JDK इंस्टॉल करते थे, फिर हमारा जावा प्रोग्राम रन होता था. सो we are only actually shipping, that time we are only shipping this Tomcat and application part. But in the container, or the the next layer to VM, actually containers should have all the dependency what it is looking for. Okay, so what I'm highlighting here, application, Tomcat, JDK, CentOS, container, everything will be inside a container. Okay, okay, now now let's correct it. So what is a container, what is the image, right? Let's go to the first, let's see this picture, so I think that will give you some idea. So if you can see, this is the virtual machine, infrastructure, hypervisor, this is the guest OS, this is the bean library, उसके बाद app, जो भी library होगा उसके ऊपर जो application होगा, right? So I'm running three VMs here. These are the 3 VMs. Okay. Now, but and the first, this is the bare metal server. If you can see, the bare metal server is having nothing hypervisor, only the hardware, kernel and user space, application में आप जैसे दे देते हो, right? इसमें प्रॉब्लम क्या था, राइट? VM और आई गिव यू द बेयर मेटल सर्वर एंड VM. मैं अगर VM से कंपेयर करता हूँ तो VM में प्रॉब्लम क्या था?
वीएम में फर्स्ट प्रॉब्लम जो था, तीन बहुत मेजर प्रॉब्लम था, व्हाट आई थिंक आई जस्ट एक्सप्लेन। फर्स्ट इज द कॉन्फ़िगरेशन ड्रिफ्ट। कॉन्फ़िगरेशन ड्रिफ्ट मतलब होता है कि आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम का जो डिपेंडेंसी है, मतलब आपका एप्लीकेशन रन होने के लिए आपको JDK 9 चाहिए, या आपका कोड लिखा है JDK 7 में, राइट, सॉरी JDK 11 में, एंड आप एक सर्वर में इंस्टॉल करो जहाँ पे JDK 8 इंस्टॉल है, इट विल नॉट रन, राइट? यस। सो द प्रॉब्लम वाज दैट ये कभी कभी सुनने में आता था, मेरा लोकल में तो चल रहा है बट प्रोडक्शन में नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन में अलग JDK का वर्जन है, right? That means whenever you are developing your application, you are using one JDK, but whenever you are deploying the application, you are having other JDK. So this is called the configuration drift, right? इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या होता है? इफ़ यू आर रनिंग, इफ़ यू आर वर्किंग फॉर अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं, आपको कॉन्फिडेंस आता ही नहीं कि मैं अगर ये तो राम तो कर दूंगा, ये सब चलेगा, मेरा लोकल में जैसे जुगाड़ कर देगा, बट पता नहीं प्रोडक्शन में क्या सर्वर है, उसमें क्या एडमिन लोग क्या डिफाइन करके रखा, व्हाट आर द डिपेंडेंसी दे गेव इट, उसका वर्जन क्या है, एक लाइब्रेरी मिसिंग हो सकता है, आई डोंट नो what image they install, right? There is no confidence, there are no confidence, right? Because of this configuration drift, क्योंकि आपने जिस जिस सोच के डेवलप किया था, जो एनवायरनमेंट डिपेंडेंसी उसके, वो एनवायरनमेंट माइट नॉट बी देयर, और समथिंग इज मिसिंग इन द प्रोडक्शन, बट अंटिल यू इंस्टॉल इट, यू विल नॉट रियलाइज कि कॉन्फ़िगरेशन ड्रिफ्ट है कि नहीं है। एक बार डिप्लॉय होने के अगर हो गया तो ठीक है, देयर इज नो ड्रिफ्ट। अगर नहीं हुआ, दैट मीन्स यू माइट हैव ए नाइटमेयर कि भाई ये अभी प्रोडक्ट डिप्लॉयमेंट हुआ, अभी इसको ठीक करो, 2 घंटा 3 घंटा पूरा रात जग के ठीक करो इसको, कॉन्फ़िगरेशन ड्रिफ्ट, right? That's a very problematic situation. That is the first problem. Second problem is application are tightly coupled with infrastructure. मतलब अगर किसी ने, समझ लो कि किसी ने सिक्योरिटी पैच डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी पैच डाल दिया VM में, आप अच्छा खासा चल रहा था, बट VM में जाके किसी ने जाके यहाँ पे ये CentOS लेवल पे एक सिक्योरिटी पैच डाल दिया, ठीक है। अभी वो क्या करता है, वो जो JDK 9 है उसके साथ वो बैठता नहीं है, या आपका जो एप्लीकेशन लेयर में आप एक डिपेंडेंसी, एक लाइब्रेरी यूज़ करते हो, वो सिक्योरिटी पैच में वो मतलब ब्लॉक हो जाता है, राइट? सो देन द प्रॉब्लम इज, some who is maintaining the server, they have the provision to provide the security patch or to install the security patch, right? But if they are doing their duty, that okay, I'm putting the security patch, but that is breaking your application, right? ये कभी कभी होता है। ये तो मैं तो बहुत बार ये सुना है कि वीकेंड में कुछ तो एक्टिविटी हो, उसके लिए मंडे से नहीं चल रहा है, आफ्टर एन वीकेंड सडनली ट्रेड एप्लीकेशन इज नॉट वर्किंग बिकॉज न्यू पैचेस इंस्टॉल इन ऑल प्रोडक्शन सर्वर, ठीक है, ये बहुत बार होता है, राइट? आर यू एग्री विद दिस? एप्लीकेशन है टाइटली कपल्ड विद इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई अगर नीचे का जो लेयर है उसमें अगर कुछ पैच डाल दिया तो आपका एप्लीकेशन फट सकता है। आई थिंक दिस वाज द यूज केस इन, एक बार हुआ था कहीं पे, कस्टमर ICICI का जो हमने बनाया था उसका कस्टमर पोर्टल एक पैच डालने के बाद नहीं चल रहा था। कस्टमर पोर्टल में कोई ट्रांजेक्शन नहीं, मतलब यू कांट लोड द मनी, यू कैन डू द टॉप अप, राइट, कस्टमर पोर्टल में। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि पीछे का किसी ने कुछ पैच डाला, उसके साथ कुछ लाइब्रेरी कंफर्टेबल नहीं था, सो इट वाज इशू। ओके, गुड, ये समझ में है? Yes. ये हो सकता है, राइट? दिस इज द हो Uh-huh. सकता है। अनप्रेडिक्टेबल टर्न अराउंड टाइम, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट ओके, प्रॉब्लम तो हुआ, बट प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए आपको पता नहीं कितना टाइम लगेगा, एंड इन द मीन टाइम व्हाट विल बी योर सिस्टम, यू डोंट नो कि आपका क्या रिकवरी प्लान है। आपको मतलब हमेशा एक जुगाड़ कुछ तो रख के पड़, मतलब कुछ तो रखना चाहिए कि आइदर यू आर एक्चुअली यू नो बिजनेस लॉस हो रहा है, या तो आपका कुछ ट्रेडिंग, समझ लो कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, इन ए सर्टेन डे अगर उसका ट्रेड एप्लीकेशन 1 घंटा बंद होता है तो शायद मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड उसको मिस हो सकता है, राइट? 1 घंटा अगर बंद हो सकते हैं वो ट्रेडिंग एप्लीकेशन। सो दिस इज द प्रैक्टिकल सिनेरियो, राइट? सो यू डोंट नो दैट वो 1 घंटा 2 घंटा कितना टाइम लगेगा। ओके, सो दिस आर द प्रॉब्लम
which will having a conventional server. Now solution to the VM solution to the VM is like this. यहाँ पे क्या होता है, कंटेनर में हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के ऊपर होस्ट ओएस जो मैंने बोला था लिनक्स का जो कर्नल है, राइट, उसके ऊपर एक कंटेनर इंजन होता है एंड उसके ऊपर सारे containers run होते हैं. Containers will have its own all the libraries dependency and along with that it will have its own application. Okay, now how I can give you a practical example, let me give you a practical example so it will be meaningful to you. Okay, now before that I just want to give you two more words, right? So अभी तक हमने कंटेनर जो आपको दिमाग में घुसाने का ट्राई किया, दैट इज़ वेरी रॉन्ग. व्हाई इट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ द राइट थिंग, लेट मी गिव यू द आइडिया. राइट नाउ अगर मैं आपको ये चीज़ बोलूँ कि व्हाट इज, सो इफ यू कैन थिंक अबाउट द jar of a file, right? What can anyone tell me what is a jar file? What is jar file? So library like contains the classes. So it's a compiled version of a program, right? Yes. Correct. But to provide that, to do the distribution, to share that compiled version of the program, you are sharing a jar file, right? Okay. But VM तो है, सॉरी VM क्या बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ कि मेरे पास सर्वर है, बट सर्वर में मेरे को रन करना है. पहले क्या रन करना है, एक एप्लीकेशन रन करना है, बट उस एप्लीकेशन के अंदर सारे डिपेंडेंसीज भी होना चाहिए. तो ऐसा मेरे को कुछ तो जार जैसा चीज़ चाहिए जिस चीज़ में मैं पूरा पैकेज करके रखूँगा, राइट? यस यस और नो? एंड मैं अगर पूरा पैकेज करके रखूँगा, उस पैकेज करके रखने के बाद मैं उस पैकेज को कहीं पे जाके डिप्लॉय कर सकता हूँ, राइट? जार को जैसे हम जावा हाइपन ये सब ऑप्शन देके जैसे रन करते हैं, ऐसा कुछ मेरा पैकेजिंग चाहिए फॉर दैट द एप्लीकेशन प्रोग्राम प्लस ऑल द लाइब्रेरीज, राइट? एंड उसको जाके मैं जब रन करूँगा तब मेरा जो इंस्टेंस बनेगा, जो रनिंग इंस्टेंस होगा, राइट, that will actually, that is the container. So container is a running instance of an image, and image is the package. So package का जो नेम है उसका नाम कंटेनर नहीं है, उसका नाम है एक इमेज, राइट? कंटेनर इमेज बोल सकते हो, और we can call it image. Simple image is the basic thing, right? And वो जो running image is a running instance of a image is a container. So when I say the word container means it's a running image. जैसे एक एप्लीकेशन रन हो रहा है आपके पास, राइट? सो दैट इज द कंटेनर. बट the layout, or what are the instruction, what are the libraries, what are the jar file, every dependency which is packaged and which is actually chimed into some binaries, right? That is the image, right? So you can create your own image, you can ship your own image, you can store the image in somewhere. Then whenever you are downloading the image and you are running that image, then your container is getting built. Okay, so running instance of an image is a container. Image is the uh, the set of the package or the binary files, right, which you are mentioning to run the application. तो ठीक है, तो बेसिकली इमेज एंड कंटेनर ये दोनों वर्ड समझ में आया? So image is, you can think of image as a jar file type of thing, और कंटेनर इज ए रनिंग, जो जार फाइल अगर रन कर देता हूँ मैं एक सर्वर में, तो उसका जो चीज़, उसका अगर जो रनिंग इंस्टेंस है उसको हम बोल सकते हैं कंटेनर. ओके, क्लियर? ठीक है? Yes. Yes. Now I think what are the other things? So basically मैं अगर आपको बोलूँगा कि ये इमेज तो ठीक है, ये इमेज समझ में आया कि इमेज में क्या क्या होता है, ठीक है? तो इमेज कैसे बनता है बेसिकली, मतलब इमेज का आर्किटेक्चर कैसा होता है, ठीक है? सो इमेज का आर्किटेक्चर ऐसे होता है
Now it's all about the next two we will discuss. We will not talk about the VM and metal bare metal server anymore. We'll talk the everything on the container image, right? So image में क्या रहता है, image अगर मैं आपको बोलूँ कि jar file क्या होता है, so you will tell me कि it's a compiled version or something, it's package, right? Somehow it is all the source code is being packaged. अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि image क्या होता है, right? सो इमेज इज अ सेट ऑफ बाइनरीज, बाइनरी फाइल्स होते हैं, ठीक है? फाइल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो बाइनरी फाइल्स होते हैं, लेयर बाय लेयर इज फाइल इज एक्चुअली गेटिंग यू नो appended and a complete image is getting generated. What do you mean by that? I mean to say that CentOS is a file system. समझ लो कि CentOS का जो भी फंक्शनलिटी प्रोसेस है, मैं एक फाइल में लिख दिया एंड मैं उस फाइल का जो बाइनरीज है उसको मैं बोलूँगा CentOS बाइनरी इमेजेस और CentOS कंटेनर इमेजेस. ओके, नाउ मेरा जब एप्लीकेशन बनेगा, राइट, मेरा एप्लीकेशन इज रनिंग, राइट, और एप्लीकेशन का बहुत सारे डिपेंडेंसीज है. फर्स्ट डिपेंडेंसी CentOS, राइट? So that means whenever my application image is getting generated, that image can't generate by, it can't directly talk to kernel layer, right? Before actually talking to kernel layer, it should inherit some base images, right? So if you go into the images world, how much image are there? There are two types of images. One is base images, one is daemon images. Base images is who can directly talk to the daemon layer. Sorry, who can directly talk to the kernel layer. That is the base images. Okay, so if you can think the CentOS is my base images, right? But JDK is not a base images. JDK is the daemon images. Okay, or suppose not JDK. If I give you an example, right? If I create a image that is containing the CentOS plus JDK, which is now I'll show you, it is already there in JDK 9, right? That JDK 9 images is not a base images. It is actually inside it. It is having all the binaries of CentOS, and above that, it is having its own process library or in own application libraries. Okay, so this image, if I create image using CentOS plus JDK, which can be the open JDK or JDK 9, and if I can publish that image will be the daemon images. Then another demo images what I can have above the JDK. If I put my application, so my application image will be the daemon images. Okay, ठीक है? So base images are images which is we can directly talk to the kernel program, and every images whatever we are going to create or application, every application, right, which we are going to create, that will be the all the daemon images. Okay, ठीक है? अभी मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा, so I think lots of theoretical is done, so let's see some example so it will be clear. Okay, now before that, if you can see my screen, I'll just go to so what Docker is doing then. So ये आपको ये समझ में आ गया कि इमेज क्या होता है, कंटेनर क्या होता है, राइट? एंड इमेज कहाँ पे मतलब इमेज का मतलब क्या होता है, मतलब बेस इमेजेस, डेमोन इमेजेस, ये समझ में आया, राइट? आई गो ऑल द डिटेल्स, मतलब डिटेल्स में हम बताएंगे उसका अंदर क्या रहता है, सब कुछ दिखाएंगे, बट आई थिंक द आइडिया यू गॉट इट, राइट? The images which can directly called talk to the kernel program, that is we call the base images, right? And above that, daemon images are the images which inherit the base images and writes in own binaries, right? तो बेसिकली जावा प्रोग्राम के लिए आपका अगर एक एप्लीकेशन का इमेज बन रहा है, वो इमेज कैसे बनेगा? पहले आपका CentOS बेस इमेज लेना पड़ेगा, उसके ऊपर JDK लेना पड़ेगा, उसके ऊपर आपका एप्लीकेशन लिख सकते हो. इट इज़ क्लियर? ओके, yes. Yes. Now let's think about what Docker is doing. अभी तक Docker का वर्ड किसी ने यूज़ किया? मैंने यूज़ नहीं किया, कहीं पे सुना नहीं रहे. Docker कहीं पे आया पिक्चर में? कहीं पे नहीं है. Docker कहीं पे नहीं है, राइट? No. हाँ नहीं है. So what Docker is doing then? Docker is doing this thing. Docker is a software. You can think of a piece of software, right, which can be installed in your any host machine, Linux based host machine, Windows based machine, right,
और मैक बेस्ड मशीन, ठीक है। एक लैपटॉप में भी इंस्टॉल हो सकता है, एक सर्वर में भी इंस्टॉल हो सकता है, ठीक है। एंड दिस डॉकर इंजन कैन टॉक टू द सर्वर डायरेक्टली, मतलब सर्वर मतलब आई एम सेइंग द होस्ट ओएस सिस्टम, ओके। दिस इज माय डॉकर इंजन, you can see the container engine. This is my docker engine. And what docker is helping you? First of all, docker is helping you to build the images from your application. आपके पास एक जावा प्रोग्राम है बट आपके पास इमेज नहीं, आपके पास जार फाइल है, डॉकर आपको हेल्प करेगा टू बिल्ड द इमेजेस, ओके। सेकेंड थिंग, डॉकर कैन हेल्प यू टू शेयर द इमेजेस, पब्लिश द इमेजेस। कैसे आप इमेज को पब्लिश करोगे, शेयर करोगे? या इमेज कैन बी सेव इन ए टार फाइल, .tar फाइल। वो टार फाइल को आप ईमेल में किसी को भेज सकते हो, है ना। फिर से अनजिप करके उसको इमेज में कन्वर्ट करके आप उस इमेज को रन कर सकते हो। और Docker, by default, Docker is giving you a repository, which is a Docker hub, we call it. You can share your images throughout the repository. It's like a GitHub. GitHub में क्या करता है, आप कोड लिखते हो, उसी कोड को आप GitHub में शेयर कर, दूसरा कोई उस कोड से उठा सकता है, right? Same thing Docker Hub is doing. But Docker Hub is not sharing the code. It is actually sharing the compiled images of it. Okay? And the last thing what Docker is doing, it can run. So how the Docker is constructing? So मैं आपको अगर Docker को समझूँ, समझने का ट्राई करूँ, तो this is the Docker thing. Let me try to so let me take a new, I don't know. बेसिकली कैसा होता है, पहले समझ लो, डॉकर भी ऐसा एक होता है, डॉकर इंजन। दिस इज द डॉकर डेमन इंजन। उसके लिए रुको 1 मिनट, समरेज ज्वाइन किया। ओके, हाय समरेज, लेट मी स्टार्ट। सो डॉकर ये जो इंटरनल है, दिस इज वी कॉल द डॉकर डेमन प्रोसेस। ये डॉकर डेमन, यू कैन थिंक ऑफ ए सर्वर और एप्लीकेशन प्रोग्राम which is getting installed inside that base system, right? Which can directly talk to the host operating system. ये डॉकर डेमन के ऊपर एक ये समझ लो कि इट्स लाइक ए इनर सेल ऑफ ए ऑनियन। इसके ऊपर फिर से एक लेयर होता है, जिस लेयर को हम बोलते हैं, so there will be another layer, right, which we call the API, Docker API. Okay, I don't know how to make it transparent. यार ठीक है, मैं इसके ऊपर ही लिख देता हूँ to just make you understand API। और इस API के ऊपर, राइट, इस API को कनेक्ट करने के लिए आपको एक CLI देते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, ठीक है, इसके ऊपर रन करने के लिए आपको एक CLI देते हैं, ठीक है, एक CLI देते हैं। ओके, so actually what is happening inside the Docker, either you can directly call the API whenever Docker is getting installed and you are starting the Docker is actually, the server is up, that means daemon process is getting up, okay. And after that, if the daemon process is getting up, that means your API will be available, and if the API is available, your CLI will be available, right? CLI is the just the client side of the Docker,
right? So you can think of a two separate process is running. One process is the client side, that is the CLI. It is taking your instruction what needs to be done in Docker, then that is being propagated to the Docker daemon processes. Docker daemon is taking care of that and it is doing its functionality. Like you want to build an image, okay, it will do whatever things is needed. If you want to run an image, it will do whatever things are needed. Okay, and if you just share or pull whatever things, right? So basically everything is done by the Docker daemon process or daemon processes. Okay, but as a user I will always interact with the Docker CLI. I will not direct having the access of that processes और ऐसा कुछ मतलब ये नहीं है. But yes, so there might be some if you installing the Docker for desktop, right? There might be some console, web console will be there. If you can see my screen, I'll just show you the web console. This is the web console. ये ये एक वेब कंसोल ऐसा मिलेगा जहाँ पे अब आपको ये डॉकर दिखेगा, इसमें कितना images running हो रही है सारे चीज़, right? This you might get it, but when you are talking about the production system or server, there will be no such application, ऐसा wizard तो होता नहीं है. तो वहाँ पे जो चलता है CLI से ही चलता है. So CLI is directly connecting with the Docker daemon. Okay, ये clear है? What is Docker? What Docker is doing? So Docker is helping you to maintain the container, to build the images, to run a container, to delete a container, to share a images, right? To publish images. Okay. So by default, Docker is having its own hub. I just told you, right? So that is the Docker hub, right? So whenever you are having the app, मतलब you logged into that, your Docker hub profile has been created actually. ठीक है. So आप अगर अपना आईडी से डॉकर हब में साइन इन कर सकते हो. Okay, so if you can see, I'll just sign in with my ID, email ID. Everyone can try their own. Okay, can everyone see? Yes. Yes. Okay, so these are the, if you can see, these are the images which I created by myself. Okay, but what are the other things? Can I have an image? So if you think about something कि MongoDB, Redis, सारे कंपनी अपना अभी जो स्ट्रैटेजी आया है, बिकॉज एवरी कंपनी इज नॉट, अगर MongoDB आपको इंस्टॉल करना, आप क्या करते हो MongoDB के लिए? आप क्या करते हो? Anyone can tell me, if you want to test the MongoDB in your application, what in your मतलब आप सीखना चाहते हो या आप MongoDB यूज करना चाहते हो, आप क्या करोगे? MongoDB इंस्टॉल करोगे, राइट? Yes. What do you mean by install? Actually you are taking the ISO image of the MongoDB, and if you in a laptop or you are in a server, right there, you will just install that ISO image, right? And that ISO image, अगर मैं डेस्कटॉप में बात करूँ, इट इज़ हैविंग ए ह्यूज, सो एक ISO इमेज का अगर साइज बता दो MongoDB का, इट विल बी लाइक माइट बी 2 GB. ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे प्रोसेस होगा. So that means, and what it will do, it will create is, it will start from that kernel layer. It will have its own kernel, right? लैपटॉप में क्या होता है, लैपटॉप में नॉट कर्नल बट या, सो लैपटॉप में VMs होते हैं. सो आपका जो टोटल मेमोरी है उसमें एक पोर्शन ऑफ मेमोरी इज विल बी एलोकेटेड to that MongoDB if you are installing MongoDB in your local, and that MongoDB processes will run, right? And it can directly call, it can directly connect with, means it is already directly connected with your kernel programming, its own kernel programming. That kernel programming is actually interacting with the hypervisor, right? And that hypervisor is actually interacting with your host, operating system, or host hardware, whatever is required, right? But that is very very bulky thing.
Now every company, whenever they are launching their product, they are they are they are creating their Docker images. That Docker images they are publishing here, Docker Hub. So if I type it MongoDB, okay, this is the official image of MongoDB. I can run the MongoDB in my system, right, without doing anything. I can run the SQL server, all the processes, how to run this thing, everything is given there, right? And if I go to the tags, so what are the tags? I'll go into details. What are the tags, right? So if you, इसका जो फाइल सिस्टम है उसमें ऐसा है कि लिनक्स के लिए इसका साइज है 229 MB। ये शायद लिनक्स AMD4 के लिए है, और ये विंडोज़ के लिए थोड़ा ये कंप्रेस साइज इतना है 2.81 GB, बट if you are talking about the Linux server it will be 229.84 MB. Okay, so this is the image, ठीक है. Now I can, this image is available in the Docker Hub, so I can take the image using Docker. I can run that image. If my system, in my system I have the Docker daemon process is running and I have the available CLI, then I can run that system. I run that MongoDB. Okay, these are the official image. So if you think of any of the application, Kafka ले लो, Redis ले लो, कोई भी database ले लो, everything have a official image that is published in the Docker Hub. Okay, and you can download that image, you can run that image. So आपको बहुत बड़ा जो बाइनरीज था, ISO इमेज था, उसको डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप डॉकर रन करो, डॉकर में आप उसको रन कर सकते हो. ओके, नाउ if this part is clear, then we will go to do some practical. ठीक है, any question? No. No. Abhi, let's do some practical. So I think now let's open that play with Docker. So everyone can, I think somebody see, can you just try, if you Docker के Docker में आपका account है? हाँ मानस है. ठीक है, so just type play with Docker, and if you can see these instances, just start the instances at least. ठीक है, अभी डॉकर का बेसिक कमांड हम बताएंगे, ठीक है, so that you will understand that. So you have the so you can understand now the what is the difference between image and containers, right? Yes, right? Yes. ठीक है, तो अभी क्या है कि मैं पहली बार, मेरा ये होस्ट सिस्टम है. सो इफ यू कैन सी दिस स्क्रीन, दिस इज माय होस्ट सिस्टम व्हिच इज हैविंग डॉकर इंस्टॉल. ठीक है, बट इसमें कितना डॉकर का इमेज अवेलेबल है हर एक लोकल सिस्टम में, लेट्स सी. ओके, टू लिस्ट all the images in a docker, what I should write docker images. Okay, now if you can see कोई इमेज नहीं है. इसका नाम है, रिपोजिटरी है, टैग है, इमेज आईडी है, क्रिएटेड है, साइज है, बट देयर इज नो इमेज. अभी तक ये सिस्टम में अभी तक कोई इमेज आया नहीं. ओके, राइट, ठीक है. Yes. अभी मैं क्या करूँगा, मैं एक एल्पाइन, यू कैन थिंक ऑफ ए बहुत ही लाइट वेट एक एक डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स का, दैट इज द एल्पाइन डिस्ट्रीब्यूशन. आई जस्ट टेक दैट एल्पाइन इमेज, राइट, and let's take it. Okay, so this alpine image is available. So if I go to the Docker Hub, it will be available inside the Docker Hub, right? So whenever I want to download that to this system, so what I'll type, docker pool alpine. Okay, now each image might have multiple version, right? मतलब जैसे जार का आपका एप्लीकेशन का अलग अलग वर्जन होता है, राइट?
आप अगर इफ़ यू थिंक अबाउट द जस्ट थिंक अबाउट द पॉम डॉट XML, आप वहाँ पे आर्टिफैक्ट आईडी देते हो, राइट, प्रोजेक्ट आईडी देते हो, फिर एक वर्जन आईडी देते हो। सो मतलब आपका एक जो एप्लीकेशन है उसका मल्टीपल वर्जन रिलीज हो सकते हैं, राइट। यस। सो उस हिसाब से हर एक इमेज का भी मल्टीपल वर्जन होता है, राइट। सो टू मेक ए another version of the same docker image you can use the tag. The tag is saying कि alpine का हो सकता है 500 वर्जन है, 500 वर्जन से मेरे को एक लेटेस्ट वर्जन एक हो सकता है जो 2.2.0 ऐसा कुछ हो सकता है, बट आई नीड ए ओल्ड वर्जन 1.1 पॉइंट समथिंग, राइट। सो देर इज अ वे टू मेंशन इट, right? And so what I need to do, I need to use the colon, this is my image name, and colon, then I need to give the version. Now here, if you don't give any version, it will take the latest version, okay. And if you want the latest version, you don't know what is the latest version, right, but you want the latest version, so either don't give anything or give latest, okay. So if I just type docker pool alpine latest, that means what is the docker hub में जो alpine का images available है वो इधर pull हो जाएगा. If you can see latest pulling from library alpine, right, and it is getting pulled, right. So download a near image for alpine docker hub library alpine dot latest, ठीक है. So if you can think that ये डॉकर इमेज कहाँ से उठा है, बाय डिफॉल्ट डॉकर इज ऑलवेज टेकिंग इट्स ओन repository or own docker hub actually, but can means how the organization work, organization same way में जैसे GitHub is the public repository for all the developer outside of organization, but inside this organization every organization has its own GitHub, right. Every organization they maintain their own VCS system version system, right. वो तो ऐसा publicly GitHub को यूज़ नहीं करते, करते क्या कोई कंपनी करता है पब्लिकली GitHub को, GitHub में अपना कोड तो नहीं रखते, राइट. नहीं, स्पेसिफिक टू देयर ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्पेसिफिक टू देयर ऑर्गेनाइजेशन. ग्रेट. नाउ डॉकर का भी आप ऐसा स्पेसिफिक टू योर ऑर्गेनाइजेशन यू कैन क्रिएट ए रिपोजिटरी, यू कैन क्रिएट योर ओन हब, ओके. You can create your own hub, and you can mention in you can configure that whenever some image is available, take that image from that library only. But here as it is a docker is a publicly, so ये always mention ये always ये होगा, it will take from the docker hub always publicly जो image available है उस image को ही ये download करेगा. बट एवरी ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव देयर ओन रजिस्ट्री जहाँ पे सारे इमेज को स्टोर करके रखेगा, ओके. नाउ हाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क और एनी अदर पब्लिक रिपोजिटरी डू वी हैव? Yes, we are having not directly public repository, but yes, we have some repository like QA. So this is the Red Hat library, right? QUAY.io. It is like a Docker Hub similar thing. तो ये भी थोड़ा फेमस हो रहा है, ये रेड हैट का है, राइट. सो ट्राई फॉर फ्री ऑन प्रीमाइसेस, ट्राई फॉर फ्री ऑन क्लाउड, ओके. सो यहाँ पे आप QA इज़ लाइक ए डॉकर का उसका अपना एक डॉकर इक्विवेलेंट टूल है, दैट इज़ पॉडमैन, ओके. दिस पॉडमैन इज सेम सिमिलर टू द डॉकर, right. But the basic of it like that we have another, we can have separate, or we have other available image registries also, whichever you want to use you can use it. So this is the fundamental thing. But as of now, whenever you are not mentioning anything from where you should pull the images, it will directly default you, it will actually directly take the docker hub only, okay. फाइन. अरे कहाँ चला गया, एक मिनट रुक जाओ. लेट मी क्लोज लॉट्स ऑफ विंडोज. Okay, now after that if I try to run the same command docker images,
राइट. इट इज गिविंग मी कि अल्पाइन करके एक इमेज तुम्हारे लोकल में है. दिस इज द इमेज आईडी, राइट. एंड इट्स साइज इज 5.59 MB. इट्स वेरी स्मॉल साइज. ओके, ठीक है. और एक पुल करते हैं माई एसक्यूएल. एज्यूम दैट आई वांट टू पुल द माई एसक्यूएल. यहाँ पे देखो यूजिंग डिफॉल्ट टैग लेटेस्ट. ठीक है. सो ये लेटेस्ट टैग यूज हुआ बिकॉज आई हैवंट गिव एनी टैग, राइट. आई जस्ट टोल्ड दैट माई एसक्यूएल को मेरे को इंस्टॉल करके दो. एंड इफ यू कैन सी दिस आईडीज आर व्हाट. दिस आईडीज आर बाइनरी आईडीज, राइट. सो मैं जैसे बोला था कि हर एक डेमोन इमेज कैसे बनता है. इट इज़ द लॉट्स ऑफ लेयरिंग. सो इसका एक लेयर रहेगा जो बेस इमेज से उठाएगा, एक लेयर रहेगा उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है, उसके ऊपर जो ऐसे बनता है. माई स्क्यूएल ऑल्सो हैविंग द सेम टाइप ऑफ थिंग. नाउ if I can able to show you, I think I'll able to show you. कहाँ गया docker? नहीं, sorry. So if I can see, if I can, ठीक है इसको छोड़ो. बाद में आते हैं. So now you are able to understand, right, how to pull one image from Docker Hub to your own Docker instance. Yes. Yes. ठीक है. Don't think too much. Step by step we will do everything, right. Now I want to know what is inside that image. मैं जानना चाहता हूँ कि ये इमेज के अंदर है क्या. So I can run a command like docker image inspect MySQL. Either we should not use the image, but let's see. No. So direct inspect. So if you can see what is inside that images. Image में रहेगा क्या? Image में होता क्या है? Right? You can inspect the image. There are lots of things you will get, right, about that image. ठीक है. ये क्या क्या चीज़ यहाँ पे important है I'll tell you. So these are the environment variable, right, which is mentioned inside that image. Okay. Now what are the CMD, right? What is the volume is getting used, right? And lots of things. Docker entry point. What are the entry point? I'll go one by one. This not one by one, but I'll just highlight you what are the things you should know about one image. Okay. Now if you can see, this is a graph driver. It is having lots of data, and these are the layers. If you can see, I talked about the layers. These are the layers. So it is built upon lots of base image and daemon images. These all are the layers of that images. Okay. Now this is a image. Okay. Now ठीक है, अंडरस्टूड. आपने हमने एक सारे जो भी हमको करना है सेंटोस लिया, फिर दूसरा कुछ लिया, फिर दूसरा कुछ लिया, जो भी है everything might be MySQL, whatever they are necessary, right. They just created it, they just built it, they just created the image. But what happened when image is getting run? When I say that, if I actually let me try to run the images then. Okay. Now MySQL रन करने से पहले अल्पाइन को मैं अच्छे से रन करता हूँ. अल्पाइन इज अ वेरी लाइट वेट थिंग, सो आई थिंक दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. ओके. नाउ if I run Alpine, so I need to give a Docker, then I need to give a run, right. I'll use some option, I'll explain you later. -d, I'll give you the idea why I'm using -d, and I'll try to give a, okay, let's not give anything, just type Alpine. Okay. Docker run command is to run that images, and I'll use the ASH. Okay.
ASH is similar type of एक यू कैन थिंक ऑफ ए बैश जैसे स्क्रिप्ट होता है, ऐसा मैंने ASH एक स्क्रिप्ट होता है बहुत ही लाइट वेट, इसको मैंने रन कर दिया. ओके, नाउ what I did earlier, I have images, two images, MySQL and Alpine. Now after the run, I have two images is there in my library, but one container is getting run, right? One container is off in my Docker system. Yes, अभी जो रन किया एक कंटेनर को मैंने रन कर दिया. Yes, yes or no? Hello. Yes, yes. Yes. हम उसको कैसे देख सकते हैं? सो द कमांड इज docker ps. जैसे आप फाइल के लिए ls करते हो, docker ps. It is showing something, nothing. कहाँ गया? I'm running the container but गायब है. Okay, so let me, so docker ps actually shows you all the running container, but if you want to see the history of the container, means it is what is the current status of the container, right? You need to use -a. If I use -a, it is giving you कि एक container create हुआ था. This is the Alpine name, commandos ash about a minute ago, but ये excited, मतलब ये exit हो गया about a minute ago. और इस जो कंटेनर का आप इफ़ यू डोंट गिव एनी नेम ऑफ द कंटेनर, डॉकर विल गिव ए, मतलब एक डिफ़ॉल्ट नेम देता है, क्रंची बैनच करके एक नेम दे दिया उसने. मैं अगर कुछ नेम दूँ सो इट विल यूज़ दैट नेम. बट मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़, राइट, मैंने कंटेनर रन किया बट वो बिना बताए वो रन हुआ, फिर वो बंद भी हो गया, राइट? यस. Yes. वाई? बिकॉज कंटेनर कैसा होता है, कंटेनर आई टोल्ड यू दैट कंटेनर इज वेरी लाइट वेट एंड कंटेनर ऑलवेज नीड सम ऑपरेशन टू डन. कंटेनर कभी आइडियल नहीं बैठेगा. ओके, कंटेनर आइडियल नहीं बैठेगा. व्हाट डू आई मीन बाय कंटेनर? सो मैंने कंटेनर को, इमेज को, सारे बाइनरीज को बना के एक इमेज रन की, इमेज को रन किया. सो व्हाट इज हैपनिंग? इट इज़ एक्चुअली कंटेनर का इमेज में जब आप बनाते हो तब आप कुछ मेंशन करते हो कि व्हाट कमांड इट शुड रन. सो यू मेंशन इन द cmd. Okay, so after getting pulling all the binaries, if it is not available, it will pull all the binaries, then it will run that process which you mentioned inside that cmd. Okay, now base image के लिए अल्पाइन इज अ बेस इमेज, उसके लिए cmd प्रोसेस में होगा क्या, और अगर cmd में कुछ होगा तो करेगा क्या? So that means if container has nothing to do, it will not stay ideal, it will excited. ओके, मतलब मेरा पास अगर काम है तो ही मैं जिंदा हूँ, अगर मेरे पास काम नहीं है मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सीधा बंद हो जाऊँगा. मैं स्टार्ट होगा, मैं बंद हो जाएगा. इट्स लाइक ए, यू आर नॉट रनिंग ए जावा सर्वर, यू आर एक्चुअली रनिंग सम मेन प्रोसेसेस. आपका मेन प्रोसेस आपने ट्रिगर किया, मेन प्रोसेस में शायद एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कुछ दिखाया है, नॉर्मल जावा एसी प्रोग्रामिंग में आपने मेन प्रोसेस को रन किया, दिखाया है, फिर बंद हो गया, जावा प्रोग्राम चलता नहीं. Okay, now if my container is something has to do, right, कैसे मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा? So whenever I'm building a container, building a container image of that container, that time I need to mention what it should run. Okay, now let's see, I just told you, let's now see, sorry, docker inspect alpine. इसका cmd में है बीन्स sh. मतलब क्या हो गया? कुछ नहीं, बीन sh रन हुआ, उसके बाद बंद हो गया. ओके, so these are the only, if you can see, only the single layer, because this is the base image.
बेस इमेज में बीन एसएच रन करूँगा तो क्या होगा, बीन एसएच के बाद कुछ तो रन करना है ना, मतलब आई नीड टू डू समथिंग, आई हैव नथिंग टू डू। तो डॉकर क्या क्या कंटेनर को आप किया, फिर वो मतलब वो जो एक जैसे मेन प्रोग्रामिंग के जो भी करना था वो किया, फिर निकल गया, उसके पास और कुछ है नहीं करने के लिए, राइट। बट I can run it to do something, right? So what I'll do, I'll run the same Alpine container, but I'll run in interactive mode. Okay, so I'll use, instead of D, I'll use ID. I का मतलब होता है इंटरेक्टिव मोड, राइट। डी का मतलब जो मैंने स्किप किया था पहले, डी इज़ द डिटच मोड। डिटच मतलब क्या होता है कि मैं अगर विदाउट डी रन करूँगा तो मेरा ये जो सिस्टम है, मतलब ये जो है ये स्टक हो जाएगा, मतलब एक्चुअली करंट थ्रेड में वो चलना चालू होगा। बट इफ़ आई जस्ट गिव ए हाइफन डी देन इट विल वर्क इन ए डिटच मोड। सो मेरा जो सी एल आई है इसको ये होल्ड करके, हैंग करके नहीं रहेगा, होल्ड करके नहीं रहेगा, दैट्स व्हाट एज द हाइफन डी। नाउ इफ यू कैन सी, इफ आई give a Docker run with the interactive mode, and I'll use the T also, tty. I'll explain the tty later. Okay, and if I just type it, let's see what is happening. Now if I docker to docker ps, okay, my Alpine is running, और इसका नाम क्या है, फ्रेंडली क्या है, इजले, ठीक है, आप 8 सेकेंड। ओके, क्लियर है। इसमें ज़्यादा मत घुसो कि इंटरेक्टिव मोड में कैसा है क्या है, बिकॉज इन एप्लीकेशन प्रोग्राम यू नो नीड टू नो, और इतना आपको इन अंदर घुसना नहीं है। बट जस्ट थिंक अबाउट ए, मैं जस्ट एक बेस इमेज को रन करो, बेस इमेज को कुछ है नहीं करने के लिए। जावा प्रोग्राम में जैसे आपका सर्वर चालू हो जाता है, सर्वर विल लिसन टू दैट पोर्ट, राइट, लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू, बट बेस इमेज के लिए कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं। तो इसीलिए मैंने इसको ज़बरदस्ती इंटरेक्टिव मोड में वेट किया कि जब कुछ इंस्ट्रक्शन आएगा तब आप काम करना, ठीक है, बट वेट फॉर दैट इंस्ट्रक्शन। If I don't give the run it interactive mode, then it will not wait for that, it will just you know run the container, it will exit that container. Okay, clear है। now importantly just take a look what I am doing here। यहाँ पे docker container का नाम मैं देना चाहता हूँ, ठीक है, and if I let me take a look if I can run it again। मैं इसको दूसरा एक कंटेनर को मैं रन करना चाहता हूँ, उसका मैं इफ आई गिव ए नेम हाइफन डबल हाइफन name is equal to Alpine 1। Okay, now if I do the docker ps, if you can see there are two container, एक का नाम मैंने दिया Alpine 1 और दूसरे का नाम कंटेनर खुद दिया, एंड दोनों कंटेनर मेरा सिस्टम में रन हो रहा है। ओके, now you can think of it, this is the running container, so running container is equivalent to the server, inside the server your process is running, and both servers are completely isolated, both server are completely isolated, it is having one image, ये directly अलग से बात करता है होस्ट ओएस के साथ, ये भी अलग से बात करता है। ओके, ठीक है, 2 more minutes then we will wrap up this today। okay, one thing is I want to see कि क्या बोले, मतलब आपने क्या बोला मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या चीज़ है, क्या है कंटेनर। इमेज समझ में आ गया, बट कंटेनर के अंदर मैं कैसे घुसूँ, कैसे देखूँ, राइट। सो आई जस्ट गिव यू वन सिंगल कमांड डॉकर, राइट, container inspect, yeah, only inspect, let me take a look if only inspect or container inspect, spelling is mistake। Okay, so this is my details of the container। okay, यहाँ पे बहुत सारे फील्ड है,
which might not be required as of now to understand, but I just want to show you some important field, right, जो बहुत ही important है. I'll just show you the network field. Yeah. What you can see, there is IP addresses that is 172.17.0.3. Everyone is there, right? Or someone left? Okay. There. Yeah. Okay. You can see the MAC addresses. You can see the IP addresses 172.17.0.3. ठीक है, ये IP एड्रेस याद रखना. अभी मैं सेम चीज करूंगा with other images, other container, not images. Images are same, both are alpine images, but इसका दो कंटेनर मैंने रन किया. फ्रेंडली इसलिए what is the IP addresses here? 172.17.0.2. That means actually in my Docker, right, I am having two separate IP addresses. That means two container is running completely independently, and it is, you can think of it as a independent server which is having IP addresses which is different. Okay, clear है? It is having its own MAC addresses. Okay, that means what, आप जब कंटेनर रन करते हो तब एक्चुअली जो हमने उस टाइम पे बोला था कि एवरीथिंग इज वर्चुअलाइज्ड. एवरीथिंग इज वर्चुअलाइज्ड मीन्स आपका कंटेनर एक सर्वर जैसा है, उसके अंदर आईपी एड्रेसेस, नेटवर्क है, बहुत कुछ है, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर. बट फिजिकली कोई नेटवर्क नहीं है, फिजिकली कोई आईपी एड्रेसेस उसको एनआईसी कार्ड से नहीं दे रहे. इंटरनली इट इज देयर. ओके, ऑल द आईपी एड्रेसेस. मैं अगर इसको अगर ये जो 172 पॉइंट समथिंग इसको बाहर से एक्सेस करूँ, नो, यू कांट एक्सेस इट. यू कांट एक्सेस इट, सिंपल. इट इज अवेलेबल इनसाइड दैट डॉकर होस्ट ओनली. ठीक है, तो हम कैसे इसको बाइंड कर सकते हैं? सो इफ यू कैन थिंक, दिस इज माई IP एड्रेस 192.168.0.28. इसके अंदर दो IP एड्रेसेस और रन हो रहे 172.17.0.2 और 0.3. Okay, now if I want to, if instead of this alpine, if I am going to run my application with the 8080 port, then how I can make it available? So basically Docker host is having all the container details, all the container details. ठीक है, all the container details it is having. It knows what the IP address is. ठीक है, now you can do it via port binding. आपको अगर ट्रैफिक को राउट करना है तो आपको पोर्ट बाइंडिंग करना पड़ेगा. एंड आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड एवरीवन शुड रीच आउट टू दिस 192.168.0.28. नो वन शुड रीच 172 दिस, ये उसको रीच करना ही नहीं है. यहाँ पे एक पोर्ट बाइंडिंग होता है, तो we will explain later in the later to tomorrow or day after tomorrow, I don't know, कि पोर्ट बाइंडिंग के साथ मतलब मैं ये कर सकता हूँ कि ये होस्ट का जो 8080 पोर्ट है ये कंटेनर यूज़ करेगा, तो जो भी 8080 आएगा सीधा ये कंटेनर को राउट होगा. दैट आई कैन डू, बट आई कैन डायरेक्टली यूज द IP एड्रेस ऑफ दैट इनसाइड कंटेनर. ठीक है, ओके. द लास्ट थिंग, I can stop the container. Yeah, you can stop the container. I can stop the container. Okay, it is taking time, but okay, this has been stopped. If I do the docker ps, you will see that only one container, because एक को मैंने बंद कर दी, इसीलिए अगर सारे देखना है तो docker ps -a. ठीक है, that is fine, right? एक एक्साइटेड हो गया.
अभी फिर से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। डॉकर स्टॉप, ठीक है। सारे कंटेनर बंद है, बट मेरा सिस्टम में 2 इमेजेस हैं, राइट। एक माई स्कूल के इमेजेस है और दूसरा एक इमेजेस है, राइट। एक एल्पाइन के इमेजेस है। आई रिमूव दोस इमेजेस? यस, आई कैन रिमूव द इमेजेस। आपको रिमूव करने के लिए RMI, रिमूव इमेजेस, देन यू नीड टू कीप द MySQL, डिलीट हो गया आपका डॉकर। देन व्हाट यू कैन रिमूव? RMI एल्पाइन, सॉरी। व्हाट इज द प्रॉब्लम? इट इज सेइंग कि आपका एल्पाइन लेके एक चल रहा है, एक कंटेनर चल रहा है। पहले आप कंटेनर को डिलीट करो या फोर्स ऑप्शन यूज करो। सो इफ आई यूज फोर्स, सॉरी, पहले देना पड़ेगा। आई थिंक -F से चल जाएगा। यस, सो अनटैग हो गया। अभी मैं डॉकर इमेजेस करूँगा, सो आई थिंक आई विल गेट नो इमेजेस। ओके, पूरा डॉकर क्लियर है। अंडरस्टैंड? सो इमेज को मैं पुल कर सकता हूँ, इमेज को मैं रन कर सकता हूँ, इमेज को मैं डिलीट कर सकता हूँ, कंटेनर को मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, कंटेनर को स्टॉप कर सकता हूँ। क्लियर? हाँ Yes. ठीक है। यूज दिस प्ले विद डॉकर, राइट। डू वॉट एवर यू वांट टू नो, इंस्पेक्ट करो, कुछ भी करो। एंड टुमारो से आई थिंक as we are going to use the Java and everything, but I think few more things will be there, Docker networking, Docker volumes, उसके बाद हम सीधा प्रोग्रामिंग सेंस में जाएंगे। तो बिफोर दैट ट्राई टू इंस्टॉल डॉकर इन योर लोकल एंड ट्राई टू मेक इट रन। सो जैसे यहाँ पे, जैसे मैंने, मेरा सिस्टम में भी डॉकर है। सो मैं अगर सिंपल, मैं अगर यहाँ पे भी रन करूँ, सो मेरा सिस्टम में अगर मैं रन करूँ, so if you can see, if I use docker ps, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 चल रहे हैं, रेडिस एंड मोंगो दोनों चल रहे हैं। ओके, सो दिस इज द थिंग। सो आपका भी ऐसा एक CLI से आप यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ द होस्ट मशीन। ये तो प्ले विद डॉकर का दूसरा है। डॉकर मतलब टाइम बीइंग के लिए देते हैं। but in your system, please try to install the docker and just take a look that if you are able to pull the images from your terminal, if you are able to run the images from your terminal or not. Okay, any question? No. नो सो फर्स्ट। Okay, ठीक है, let's connect tomorrow. Thank you. ओके।